Students, today we will start the topic that is probability, the basics of probability and the problems related to probability. So first of all, we can see what is sample space. All possible outcomes in an experiment or trial or any planned experiment, the possible outcomes or all possible outcomes is known as sample space, and we will denote this sample space with capital S. हमारे पास यहाँ पर तीन एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल वन. फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन वी टॉस्ड अ कॉइन. तो जब हम इसको टॉस करेंगे तो हमारे पास उसके आउटकम्स क्या आएंगे? हेड, टेल. दिस इज द ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ टॉस्ड अ वन कॉइन. एंड इफ वी थ्रो अ डाइस, वन डाइस, उसके जो आउटकम्स आएंगे हमारे पास, द आउटकम्स विल कम्स आउट 1 to 6. And if there is a football match, so what will be the sample space? Win, loss and tie. So these are the examples of sample space. After this, what is Cartesian product? In Cartesian product we need two sets, as you can see here, A and B, and we need to find the Cartesian product of A cross B. And how can we find? We will take the first element of set A and make the ordered pair. इसके ordered pair बनाएंगे, वन लेंगे, वन का A और B के सम ordered pair बनाएंगे, as you can see here. Similarly, then next we will take 2. 2 का तमाम जो B के elements हैं उनके साथ ordered pair बनाएंगे. फिर 3 को लेंगे और 3 का B के तमाम elements के साथ हम ordered pair बनाएंगे. So in this way we can find the Cartesian product. This is the way to find the Cartesian product, and keep it in your mind, A cross B is never equal to, this is not equal to, generally these are not equal, B cross A. Generally they are not equal. इस तरह से अगर Cartesian product A cross B लें और B cross A लें तो equal नहीं होंगे हमारे पास. Okay, next we will see how can we find the sample space. There is some examples. The first example, what is a sample space if two coins are tossed simultaneously? अब हम देखते हैं कि अभी हमने इससे पहले एग्जांपल देखी जिसमें एक ही कॉइन था टॉस किया, उसका सैंपल स्पेस क्या था, क्या आया था? हेड, टेल. हेड और टेल उसकी जो थी सैंपल स्पेस था. नाउ वी हैव टू कॉइन्स, एक को हम S1 कह देते हैं, दूसरे को S2 कह देते हैं. नाउ वी नीड टू फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ दीज टू कॉइन्स. उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? बाय टेकिंग द कार्टियन प्रोडक्ट. So when we will take the Cartesian product of S1 and S2, so this will be the result. ठीक है, उसके ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे, and we can write it as head को हम लिख सकते हैं this like this, HH, head tail like this tail head we can write it like this, and tail like this. So this is the sample space of two coins. Okay, and when they will tossed simultaneously, दो कॉइन्स थे, उनको हमने एक साथ उसको टॉस किया, उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट वन. इसी तरह से हम वी कैन टेक मोर देन टू कॉइन्स, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. वी कैन टेक फॉर एग्जांपल द सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट अ टाइम. वो हम किस तरह से लेंगे? वी नो, अभी हमने फाइंड किया है सैंपल स्पेस ऑफ टू कॉइन्स, दिस वन. अब इसी का कार्टियन प्रोडक्ट फिर एक और कॉइन्स के साथ ले लें जिसको हमने टॉस किया है. सो अगेन वी विल मेक द कार्टियन प्रोडक्ट, और इसके हम इस तरह से इसका जो कार्टियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट लें दैट इज हेड का हेड और टेल के साथ जब हम पेयर बनाएंगे तो ये बन जाएगा दिस वन. फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे, उसका फिर एच और टी के साथ हम पेयर्स बनाएंगे तो ये बन जाएगा. Clear? And similarly all of these things. So this is very easy to find the Cartesian product when we have 2 coins, 3 coins, 4 coins and so on. We can take the Cartesian product और से हम sample space उनका जो है वो generate करते जाएंगे. So for you, find a sample space of 4 coins are tossed. आप लोग अभी find करें
कि आपके पास 4 कॉइन्स हैं एंड वी नीड टू फाइंड द सैंपल स्पेस। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव नॉट दिस, ये हमारे पास मौजूद है 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस। 4 का निकालना है तो इसी के साथ हम कार्टियन प्रोडक्ट ले लेंगे, वन मोर लाइक दिस। ये अभी जो हमने फाइंड किया था हेड और टेल का, तो हमारे पास किसका सैंपल स्पेस आ जाएगा? 4 कॉइन्स का। So this is a question for you to find a sample space of 4 coins are tossed at the same time. You need to find it. Okay, we see one more example. इस example में क्या है? You can see हम क्या कर रहे हैं? 2 dice ले रहे हैं. We have 2 dice are rolled. So we need to find the sample space of 2 dice when they are rolled. तो कैसे आएगा? This is also very simple. This is the sample space of one dice. This is the sample space of another dice. Okay. तो जब हम इसका सैंपल स्पेस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बाय कार्टियन प्रोडक्ट। तो कार्टियन प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका तमाम एलिमेंट्स के साथ हम क्या बनाएंगे? ऑर्डर पेयर। ठीक है, विद ऑल एलिमेंट्स। सो दिस इज, यू कैन सी हेयर कि 1 का जो सेकंड सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ हम ऑर्डर पेयर लेंगे। सिमिलरली 2 को लेंगे एंड मेक द ऑर्डर पेयर of all elements of this set। ठीक है, you can see it here। फर्स्ट एलिमेंट 2 है और दूसरा सेकंड एलिमेंट हमारे पास, ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। एंड सिमिलरली we can find the sample space of 2 dice are rolled, you can see on the screen। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? we can easily see because we know there are some rules to find the sample space। multiplication rule जो होता है उससे क्या होता है? इसमें 6 एलिमेंट है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आएगा? 36। तो 36 एलिमेंट्स इस सैंपल स्पेस में हमारे पास आ जाएंगे। So there is one more question for you, and the question is find a sample space if 2 coins and 1 dice is tossed। अभी आपने सैंपल स्पेस फाइंड करना है किसका? when 2 coins, 2 coins का और 1 डाइस का। ठीक है, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज वेरी इजी। इन द प्रीवियस एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था कि जब 2 कॉइन्स को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या आया था, वो हम ले लेंगे। और इसी तरह से हमारे पास जो डाइस, जब हम एक डाइस हमारे पास होता है तो उसमें सैंपल स्पेस 1 to 6 एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं। तो इन दोनों का आप कार्टियन प्रोडक्ट लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आई कैन शो यू द प्रीवियस एग्जांपल्स जिसमें हमने 2 कॉइन्स किया था जी। दिस वन, in this example this is a sample space of 2 coins। okay, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है। जब हम एक, we need to find the sample space of 2 coins and 1 dice, तो इसी का हम कार्टियन प्रोडक्ट ले लेंगे विद 1 डाइस। तो उसके एलिमेंट्स होते हैं 1 2, ठीक है, अप टू 6 तक हम इसको ले जाएंगे और इसके साथ आप इसका क्या फाइंड कर लेंगे? कार्टियन प्रोडक्ट। तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा ऑफ 2 कॉइन्स एंड 1 डाइस। And what is next? Next is what is event। And we know what is event. It is a favorable outcome in an experiment and is denoted by E। Okay, and this is always a subset of sample space। Event क्या होता है? This is individual outcome or the set of outcomes of an experiment, of any trial, and we will denote this event by capital E। और ये हमेशा हमारे पास जो sample space होता है उसका subset होता है। For example, when we tossed a coin, so head appears by tossing a coin। head appears
by tossing a coin. In this experiment, the event is E is equal to H, because we know that जब हम किसी भी coin को toss करते हैं, we have two outcomes. One is head and one is tail. तो जब head appears by tossing a coin, तो हमारे पास उसका जो event होगा that is E is equal to H. One element हमारे पास आ जाएगा. So this is the event of a head. Okay, next is the formula to find the probability of an event, as you can see on your screens. Probability क्या होती है? Probability is a numerical description of how likely an event is to occur. ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आती है किसी भी इवेंट की वो किस तरह से अकर होगा. ओके, यहाँ पे देयर आर टू मोर थिंग. इट्स वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1. कोई चीज चांस होता है और नहीं होता. सो 0 मीन इम्पॉसिबिलिटी and 1 mean certainty. The important thing is here the formula to find the probability of an event. Okay, the formula is, please note down this formula. Probability of an event is equal to n e number of elements in event divided by number of elements in sample space. So number of elements in E, this is NE, and number of elements in the sample space we will denote it with NS. So this is the formula. Next we will use this formula to find the probability of some events. And please note this formula कि ये किसके इक्वल होता है हमारे पास. Probability of an event is equal to number of elements in event divided by total number of elements in a sample space. उससे हम divide कर दिया करेंगे तो हमारे पास उस event की probability आ जाएगी. Okay, now we have an example to find the probability, and the question is, as you can see here, a coin is tossed. हमने एक coin को toss किया, okay, and find the probability of occurrence of head. अब हमें find करना है कि उसमें जो head है उसके आने की क्या probability है, occur होने की क्या probability, क्या chances हैं उसकी. ठीक है, and we will find a numerical value here, क्योंकि अभी हमने देखा था कि numerical form में हमारे पास आएगा. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? we need a sample space. जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? दिस वन, हेड एंड टेल. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस? 2 एलिमेंट्स. हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आएंगे. ओके, एंड अब हमने क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ हेड. तो इसी सैंपल स्पेस में हमारे पास हेड कितने फाइंड आउट. what is e? E is equal to h, one element. So how many elements in this e? There is only one element. And we know the formula. अभी हमने formula देखा था. probability of an event is equal to number of elements in event divided by number of sample space. तो हम इन values को put करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2. So this is the chance, this is the probability of occurrence of head in when we will toss a single coin. This is very simple कि हमने क्या किया? sample space लिया सबसे पहले, और जिस चीज की हमने probability find करनी है उसका हमने एक सेट ले लेना जिसको हमने E से डिनोट किया है. एज यू कैन सी हियर H जो हमारे पास था. फिर हमने देखना है कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो इवेंट जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी उसमें कितने एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, इसका हमारे पास एक आंसर आ जाएगा. वी हैव अनदर एग्जांपल. यहाँ पे एक और एग्जांपल भी उसको भी हम देखते हैं जी. इन दिस एग्जांपल वी कैन सी 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. अब 3 कॉइन्स को हमने टॉस्ट किया है. what we need to find? We need to find the probability that exactly 2 head appears. कि हम देखेंगे कि कहाँ पे 2 heads, exactly 2 heads, जहाँ पे 2 heads हमें मिलेंगे उसकी हमने probability find करनी. And we know in the previous slides we find out
द सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स, ये हमने फाइंड आउट किया था अभी। ओके, पिछले एग्जांपल्स में अभी हमने इसको फाइंड आउट किया है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर। अब आप देखें इसमें कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास 2 हेड्स आ रहे हैं, फाइंड आउट। ठीक है, इसमें से फाइंड करें और चेक करें कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी विल सी दिस वन। हाउ मेनी हेड्स इन दिस हेयर? देयर आर 3 हेड्स। नो, वी कैन नॉट टेक दिस वन। हाउ मेनी हेड्स? 2 हेड्स, इसको हम लेंगे। हाउ मेनी हेड? हेड टेल हेड, 2 हेड, इसको भी हम लेंगे। हेड टेल टेल, नो, we need exactly 2 heads. Tail head head, yes, we can take this value. Tail head tail, no, we need 2 heads. और इसमें देखें टेल टेल हेड, नो, इसको भी नहीं हम ले सकते। और इसमें तीनों टेल्स हैं, ये भी नहीं हम ले सकते। ओके, तो जो ई में जो एलिमेंट्स आएंगे, एक तो ये वाला एलिमेंट्स आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा और तीसरा ये वाला आ जाएगा। नाउ वी कैन सी इजीली। अब इसमें आप देखें कि सैंपल स्पेस में कितने टोटल एलिमेंट्स यू कैन सी। हाउ मेनी एलिमेंट्स? देयर आर 8 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ई? देयर आर 3 एलिमेंट्स। तो फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी of exactly 2 head appears when 3 coins are tossed. Okay,